Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the comprehension. Let's start. Students, we are at the light board, and as I have told you in the intro, today we are going to discuss a very important question, that is regarding comprehension. It is not generally asked as far as Mdcat is concerned, but it is the core question as far as Ecat is concerned. Ecat जिन बच्चों ने देने जाना है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज Ecat में इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें क्वेश्चनिंग एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का है. एक पैसेज आपको दिया जाएगा एंड यू विल बी आस्क्ड 10 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पैसेज, और आपको उसमें फिर देखना होगा उसके आंसर्स भी गिवन होंगे एंड यू विल हैव टू पिक द करेक्ट आंसर. सो प्रॉब्लम क्या है और ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है क्या? Very usual question. It is not something out of this world for you. बड़ा कॉमन क्वेश्चन है. आप नर्सरी में जाते हो, प्रेप में जाते हो, तो वहाँ से आपको शुरू करवाया जाता है कि अल्लाह ताला कहाँ हैं, और उसका फिर जवाब दिया जाता है आसमानी किताबें कितनी हैं, और उनके 4 नाम फिर आपको गिनवाए जाते हैं. तो वो बेसिकली क्या होती है? वो कॉम्प्रीहेंशन है. ठीक है. It is basically derived from the word comprehend, and comprehend means to understand, and when we call it comprehension, it means obviously it becomes a noun. तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है अंडरस्टैंडिंग. अब होता क्या है, जैसे भी मैंने बताया, Mdcat में थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ब्रीफ पैसेजेस दिए जाएंगे और उसके एंड पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट कोर आइडिया जो है उसका यही है. 9th-10th में भी आप कर चुके हैं. जो बच्चे ओ लेवल्स के थ्रू आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. सो प्रॉब्लम्स हमें क्या आती हैं? As soon as the problems are concerned, जो नंबर 1 प्रॉब्लम आती है वो आती है आपके लिए रीडिंग, और आई शुड से फ्लुएंसी इन रीडिंग. जिन बच्चों की रीडिंग कमज़ोर है, या दैट द स्टूडेंट्स that cannot actually read speedily, उनके लिए ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिकॉज यू हैव अ वेरी ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम. बहुत मुख्तसर सा वक्त होता है, 10 मिनट होते हैं ऑलमोस्ट आपके पास, एंड इन दोज 10 मिनट्स यू विल नॉट ओनली हैव टू रीड द पैसेज, बट यू विल ऑल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड. सो रीडिंग एक ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम है. देन decoding the text, that can also be a bit of a problem for you. Sometimes you do not understand the meaning, you do not understand the context of the sentence, तो उसमें भी आपको जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है. सो मेजर जो है वो यही प्रॉब्लम्स हैं. एक और प्रॉब्लम जो आपको फेस करना पड़ सकती है, that is eye catchers. Sometimes कुछ questions, कुछ options ऐसी होती हैं, they look very straightforward, they look very apparent, but actually they are not the correct options. So उन eye catchers से भी आपको क्या करना होता है? Avoid करना होता है. अब इनको avoid कैसे करना है इन सारी चीज़ों को? The very first thing is
skimming the text. Now look, you have only 10 minutes, or in Mdcat, if you talk about Mdcat, you have a minute or two to read that passage and read the questions and all the important information in that passage, and you'll have to answer the questions as well. So वो जो हम कहते हैं कि मुकाबला बहुत सख्त है और वक्त बहुत कम है, that is the case. So how to avoid that, how to basically minimize that shortage of time, कैसे उसको आपने ठीक करना है? बेहतरीन हाल उसका ये है कि do not go for detailed reading. That is the key. If you are going for detailed reading, each and every question is discussed, and that each and every line is thought upon basically, and then you won't be able to get anywhere. फिर आपके लिए उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. स्किम करना है, गो थ्रू करना है, जल्दी जल्दी से चीज़ों को गो थ्रू करना है, और उसके लिए द बेस्ट वे है हाउ टू स्किम. बेस्ट वे है adopt Hunter's approach or bottom up approach. This is the most important thing as far as comprehension is concerned. अब ये हंटर्स अप्रोच क्या है और बॉटम अप अप्रोच क्या है, इसको मैं अगर सिंपली कहूँ तो इसका मतलब है read the questions first. नॉर्मली जब हम कॉम्प्रीहेंशन पैसेज कर रहे होते हैं तो व्हाट वी डू इज कि पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, देन वी रीड द क्वेश्चंस एंड देन वी ट्राई टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. बट इस प्रोसेस में होता क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स will make you lose a lot of time. कैसे टाइम वेस्ट होगा? पहले पैसेज पढ़ा, दो तरह से उसमें टाइम वेस्टेज हो जाएगी. बिकॉज मैं इधर लिख भी रहा हूं, हाउ इट विल लूज यू टाइम. Because it needs a detailed reading of everything. You will have to relocate your answers. अब दो चीज़ें हैं. नंबर वन तो ये कि when you are reading the passage first, you do not know what is important for me in this passage and what is not. And let me tell you one thing. Almost 70% of the passage is irrelevant. 60 to 70% passage हमेशा irrelevant होता है. For example, you have been given a passage containing 40 lines और उसमें से questions कितने होंगे? 10. Automatically means almost 30 lines, 75% of the total passage is irrelevant.
उससे मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. बट व्हेन यू आर रीडिंग द पैसेज फर्स्ट, यू आर यूजिंग दैट traditional method, there is every likelihood that you do not know which portion is relevant and which portion is irrelevant. So आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या करनी होंगी, वो पढ़नी पड़ेंगी. नंबर 1. फिर it can create issues regarding vocab, there will be words which will be very difficult for you to understand, but these words will not be the relevant words. उनके मुतालिक कोई क्वेश्चन ही आपको नहीं आया होगा. लेकिन चूंकि आपने क्वेश्चन पढ़ने ही बाद में है, पहले आप पैसेज को समझने में टाइम लगाएंगे, तो you will not get to know that this particular word is extremely irrelevant. I do not need to focus on that word, or I do not need to know the meaning of that word, because that word is extremely, completely irrelevant as far as the questions are concerned. आपको शेक्सपियर नहीं बनना उस आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए. नो नीड टू डू सो. आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है. एंड इफ समथिंग is not relevant to that question, you can easily, conveniently ignore that thing. ठीक है. But ignore तभी करेंगे when you read the questions first, and that is why it is called hunter's approach or bottom up approach. Hunter क्या करता है? Say if a hunter goes in a jungle for hunting, so do you think that he will start locating his prey everywhere around the jungle? हर जगह वो तलाश करता फिरेगा. ये सपोज वो जा रहा है सब हिरन के शिकार के लिए, और उसको पता है कि हिरन जो है वो असर के बाद बाहर निकलेगा, तो आपका क्या ख्याल है कि वो फजर के वक्त ही जाके बिल्कुल इक्विपमेंट रेडी करके बैठ जाएगा? नो. जब उसे पता है कि उसका टाइम ये है, उसकी प्लेस ये है, तो he will target the specific place at a specific time, and that is what you have to do. आपको questions पहले पढ़ने ही इसीलिए हैं कि आपको पहले से पता लग सके, before even reading the passage, that what is the relevant part of that passage, and that will help you a lot in skimming the text. आपको बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये चीज़ मेरे relevant नहीं है. और bottom up approach भी इसको इसीलिए कहते हैं because you are going from bottom to top. First you are reading the questions and then you are looking for their answers in the passage. एक तो इस तरह से ये टाइम आपका बचाएगा. Secondly, when you are reading the passage first, or I should say when you are using the traditional method of doing comprehension, you will have to relocate your answers. Because पहले तो आप सारा जोर किस पे होगा? Understanding of the passage पे होगा. You will not be bothered कि इनके questions क्या हैं. फिर आप questions पढ़ेंगे. अब जब question पढ़ लेंगे तो वो passage पूरे का पूरा आपको याद तो नहीं होगा. It is impossible कि आपको वो पूरे का पूरा passage याद हो जाए एक reading में, one go में. It is impossible. तो आप क्या करोगे? You will have a tentative idea कि यहाँ almost मेरा answer था, and you will go relocating that answer. दोबारा से ढूंढना पड़ेगा. तो मेहनत क्या हुई? डबल हो गई ना. पहले पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर अब उस पैसेज में से आंसर ढूंढ रहे. So if you are doing that, you are completely wasting your time. And time is a very precious commodity as far as entry test is concerned. Otherwise भी precious ही है, but यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है. So the best thing you can do is to read the question first and then skim the test. और फिर उसमें क्या करना है आपने? Ignore the elaborations and examples. उसके जो examples हैं
एलैबोरेशंस हैं उनको इग्नोर करना है, मेन पॉइंट पे आपने फोकस करना है, अदरवाइज आपने उसकी बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाना। सेकेंडली, learn to the meanings of irrelevant words। जो irrelevant words हैं उनको भी इग्नोर करना सीखें। नॉर्मली क्या होता है, एक साइकी है इंसान की कि कोई मुश्किल वर्ड आ गया, अब आप उसको सोच रहे हो कि यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। भाई, यू डू नॉट नीड टू डू सो, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ डूइंग इट बिकॉज दैट वर्ड इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल। आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए इररेलेवेंट वर्ड्स को भी क्या करना है, आपने कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। देन नेक्स्ट थिंग इज be careful about the first and last passage. If it is a comparatively long passage, it will contain multiple passages. तो उसमें जो फर्स्ट और लास्ट पैसेजेस हैं उनके बारे में आपने क्या करना है, उनके बारे में बहुत केयरफुल रहना है, because normally they contain the main theme, the main idea of the passage। because जब आप शुरू कर रहे होते हो तो तब भी आप मेन फोकस क्या अपना इंट्रोडक्शन देते हो उसमें, एंड व्हेन यू सम अप द डिस्कशन, व्हेन यू फाइनलाइज दैट डिस्कशन, तो लास्ट पैसेज में भी आप क्या कर रहे होते हो, उसका ओवरव्यू दे रहे हो। सो फर्स्ट और लास्ट पैसेज को आपने जो है वो बहुत ही ध्यान से देख लेने। एंड देन names, dates, events or any numeric data must be remembered carefully। क्यों? बिकॉज इनके रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता है एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ मेकिंग एन एरर रिगार्डिंग दीज, बिकॉज ये क्लियर कट वैल्यूज़ होती हैं। तो वैल्यूज़ में ऑब्वियसली आपके लिए किसी भी तरह से फॉल्ट दिखाना या उसको इग्नोर करना वैल्यूज़ को, दैट कैन बी fatal to you। Now, in the next chunk of the lecture, we'll talk about the types of questions you can have in comprehension passage, and then we'll, inshallah, wind up this lecture. Ladies students, we are at the lightboard, and now we are discussing the types of questions you may have or you may face in comprehension passages. But before we move on, let me tell you what type of text they can give you in comprehension passages. What types of text can be given? You can be given a narrative text. Narrative text means that you will be given a detailed passage and it will contain an incident. It will narrate an incident. That is why it is called narrative text. In the same way, you can be given descriptive text. Descriptive text will describe a particular personality, a particular place, or anything. That is why it is called descriptive text, because it describes something. Thirdly, you can be given a persuasive text. Persuade से आप इसको याद रख सकते हो, persuasive
It basically motivates you, it basically persuades you towards something. That text can also be given, that type of text can also be given. Then you can have argumentative text. It will be based on certain arguments, कोई एक thought दे दी जाएगी, and you will be given different arguments for and against that particular idea. And then finally you can have expository text. It will be about an idea, about an ideology, about a theory. ठीक है, उसको क्या करेगा, elaborate करेगा. तो इस टाइप के टेक्स्ट जो है वो आपको दिए जा सकते हैं in order to check your comprehension skills. टॉपिक्स क्या हो सकते हैं? All these texts can be about literature, politics, history, science, social sciences, etc. मतलब टॉपिक आपके लिए कोई भी हो सकता है, नेचर ऑफ टॉपिक कुछ भी हो सकती है, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट. लाइक यू मे फील हॉरिफाइड के इतने सारे टॉपिक्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा. यू डू नॉट नीड टू ऐड एनीथिंग. जो भी कुछ होगा वो उस पैसेज में गिवन होगा. यू ओनली हैव टू पिक द करेक्ट इंफॉर्मेशन एंड दैट्स इट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू मे फेस. The very first thing or the very first type of question you will have in comprehension, they are actually vocabulary based questions. अब vocabulary based questions को हम 4 further categories में divide करते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी हैं. The number one is synonyms. You can be asked about what is the correct synonym of that word. Now when we talk about synonym and antonym, एक चीज आपने इन दोनों में ध्यान रखना है. Be careful about the context. Now every word is actually used in a typical context. एक certain background में use होता है, and that context can completely change its meanings. For example, if I write down a word smart, it carries different meanings. The number one meaning is slim. If I say he is trying to get smart by losing some weight, you can clearly tell me that here smart means slim. But the same smart can be used for intelligent. He is a smart boy. He will understand what I wanted to communicate. ठीक है. अब यहाँ पर smart का मतलब क्या है? That is intelligent. That is, he is a clever boy. He will get my meanings very quickly.
इसी स्मार्ट का एक मतलब हैंडसम या ब्यूटीफुल भी हो सकता है. It can be a meaning. For example, you are looking smart today. Here, smart means not slim, not intelligent. Here it means beautiful, खूबसूरत. और इसी smart का एक मतलब sharp पेन भी हो सकता है. नाउ यू विल फील कि सर ये तो नहीं कहीं हमने पढ़ा. आपकी बुक की लाइन है कि when his back begins to smart, it's like a penknife in his heart. So here, smart means sharp pain. एक और word है suppose seat. You know we mean chair when we use seat. But इसी seat को अगर मैं कहूँ कि इस्लामाबाद is the seat of Pakistan, here I mean the capital. So you see, here it is not used for seat, for chair. It is used for the capital, Darul Khilafah. आपने पढ़ा भी हुआ है. Its seat, Cordova, with over 100,000 inhabitants. उसमें jewel of the world में. So words can contain different meanings depending on their context. So whenever you are asked to write down a synonym or an antonym, be careful about its context. For example, elaborate एक word है. We all know elaborate means to explain, but it can also mean complex. It can also mean flowery. आपने पढ़ा भी हुआ है elaborate modes of address. उसमें आपका जो लास्ट लेसन है मुस्तफ़ा कमाल, ठीक है, कहते हैं these flowery phrases and elaborate modes of address for of no use for this new nobility of effort. So you can guess that the synonyms and antonyms, they depend heavily on the context. So be careful while locating these synonym or antonyms. Thirdly, we can have synonym variant, and on the other hand we may have antonym variant. Now these variants can be created in two different ways. One is the far off meaning. कि वो exact meaning तो नहीं है, but somehow they are associated with each other. थोड़े जैसे हम कहते हैं ना ये रिश्तेदार और ये ज़रा दूर के रिश्तेदार हैं, तो synonym variants जो हैं वो क्या होते हैं, they are दूर के रिश्तेदार, कि exact same word तो नहीं बन रहा था, ये same synonym ये same antonym तो नहीं बन रहा था, but somehow they are connected with each other. And then synonym variants or antonym variants can also be made by changing
by changing part of speech. So ये भी हम कर सकते हैं. दोनों की एग्जाम्पल दे देता हूँ. Find the correct antonym variant. For example, मैं कहूँ war, and the options we have is friendship, beta, jealousy, Charlie, tussle, and delta is greed. इसको दोबारा करूँ. Now we know that the correct antonym of war is peace, but we do not have peace here. यहाँ पर तो हमारे पास peace जो है वो नहीं है ना, तो फिर हम क्या देखेंगे? Obviously, jealousy and war, they do not have anything to do as far as antonyms are concerned. Greed and war, they are also not interconnected. Friendship and war, yes, they are not antonyms, but they are antonym variants. So our right option will be option alpha. ठीक है, because अब होना तो क्या चाहिए था, वॉर का पीस, बट पीस से रेलेवेंट क्लोजेस्ट मैच कौन सा है? दैट इज फ्रेंडशिप. एंड इफ वी गो फॉर सपोज सिनोनिम वेरिएंट, देन टसल इज द synonym variant of war. Because वैसे तो synonym क्या होना चाहिए था? Fight, battle. But we know कि tussle का मतलब भी क्या है? ये जंग तो नहीं हो रही, but there is some friction, there is some conflict, there is some bad thing, bad blood going between these two. So this is how you make synonym variant and antonym variant. And as far as this second type is concerned, changing the part of speech, वो भी देखते हैं. For example, if I say smart and I say cleverness. Now smart and cleverness, they are synonym variants, because smart was actually adjective. इसका synonym क्या होना चाहिए था? Clever. अगर clever होता तो then they would have been the synonyms of each other, because smart means cunning, clever, sharp, intelligent, और clever का भी ये मतलब होता. But here I have changed the part of speech. Here it conveys the same meaning, but they are different parts of speech. Smart is an adjective and cleverness is a noun. So that is why we are not calling them synonyms. We are calling them synonym variants. So ये चार vocabulary के questions आपको आ सकते हैं. Now let's move to the next type of questions. The next type of question we have is actually direct questions. Direct questions क्या होते हैं? They are about a particular number, a numeric value, a date, a month, year, or a particular quantity. इनके लिए मैं एक टैगलाइन दे देता हूँ आपको. सीधी बात, no बकवास. Now this is a funny tagline,
you may remember or you may connect it to a brand as well, but हम उसका जिक्र नहीं कर रहे. सीधी बात, no बकवास. You do not need to add any elaboration, any explanation. Simple आपको क्या करना है, जो quantity आपसे पूछी जा रही है उसको आपने reply कर देना है. They normally start with how many, how much, what number, date or value. इससे normally इनको हम start करते हैं. If we talk about the text, there are so many questions of this nature. For example, in the first chapter, you are asked what is the significance of author's life insurance policy, and you have been clearly told that it was worth $50,000. So ये क्या था? ये direct question था. In the same way, if I ask you, okay, how much did Della save for Christmas gift? उसका क्लियर जवाब जो है वो भी आपके पास मौजूद है, दैट इज $1.87. या अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मच मनी डिड मौलवी अबुल हैव एज हिज सेविंग्स, तो इसका भी क्लियर कट जवाब आपके पास मौजूद है, दैट ही हैड 43 rupees. So all these answers involve numeric values, clear cut answers, and that is why we call them direct questions, and that is why I have used the tagline सीधी बात नो बकवास. आपने कोई और चीज जो है वो नहीं करनी होती. Third one are inferential questions. Now, inferential, it is derived from inference. Inference क्या है? Making a logical guess. Here no direct information will be given to you. कोई किसी तरह की कोई information आपको नहीं दी जाएगी. But कुछ clues दिए जाएंगे, कुछ hints दिए जाएंगे, and using these clues you will have to make a logical guess regarding the correct option. That is what we call inference, wisdom, extract कर लेना किसी चीज को. तो ये questions भी आपको आते हैं. Now these inference type questions can be divided into two different types, or you may say there are two types of inference. आप उसको यूं कर लें, there are two types of inference. The number one, 3.1, is called logical inference. Now you'll feel that it is based on some logic. That is why it is called logical inference. No. This type of inference is based on
डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बेस्ड इन्फरेंस होती है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। इफ आई से the criminal made a lot of hue and cry he must be standing in alpha police station, beta courtroom, Charlie jail cell in Delta Park. Now you can clearly see that the criminal cannot be in the park. So ये तो option क्या होगी? Obviously it will be excluded very easily. Now the remaining three are important. You may feel that the criminal was in police station, but remember we have used the word criminal. Criminal is the one who is proven guilty, and if someone is proven guilty, he must not be in the police station and he cannot be in the courtroom either. He will definitely be in a jail cell, because we are using criminal. That is why we are using option Charlie. Now instead of criminal, for example, मैं इसको क्रॉस करता हूँ and instead of criminal I use word accused. With this one word, our option will switch from option C to option alpha. Now we shall choose option alpha because the accused must be in a police station. He will be probably facing investigation. Courtroom इसलिए नहीं करेंगे because courtroom is not the place to make hue and cry. That is why he can either be in the police station or in a jail cell, depending on the definition of criminal or accused. Accused क्या होता है? Someone who is just blamed and that blame is not yet proven. उसको हम क्या कह रहे होते हैं? Accused. और proven guilty को हम कह रहे होते हैं criminal. So that is how the logical inference will come into play. Now let's talk about the second type of inference, that is empirical inference. Now empirical inference, this type of inference is based on observation. ये observation पे बेस करेगा, ठीक है? Empirical evidence you must have heard in sciences. What is empirical evidence? Empirical evidence means the observatory evidence, the evidence you gather through your observation, that is called empirical evidence. In the same way, the inference you gather through observation is called empirical inference.
अब ये कैसे काम करेगी, इसी को हम देख लेते हैं। The criminal was making a lot of hue and cry after hearing the verdict. He must be in, again alpha, police station, beta, courtroom, Charlie, jail cell, and delta, park. Now we'll have to use both these inferences. The first thing is criminal. So obviously police station is ruled out and the park is also ruled out. Now we have two more options, jail cell or courtroom. Yes, we have known that he is a criminal, proven guilty person, but we also know that he started this hue and cry after hearing the verdict. Now the verdict can only be announced in the courtroom. It cannot be announced in the jail cell. So the combination of logical inference and empirical inference will lead you to option beta and not option Charlie, because you cannot hear the verdict in the jail cell. You will hear the verdict in a courtroom. So this is how the logical inference and empirical inference work hand in hand. एक और कर लेते हैं. The girl was standing in the graveyard sobbing. कि लड़की जो है वो क्या थी, उसमें कब्रिस्तान में खड़ी क्या कर रही थी, सिसकियों से रो रही थी. She was crying as option A, some dear one of her had died. Beta, she was not feeling well. Charlie, she was happy. In delta, she had a life threat. Now she was standing in the graveyard sobbing. कब्रिस्तान में खड़ी रो रही है. Obviously if she is not feeling well, so she will sob, but not in the graveyard, in the hospital probably, in the clinic. She was happy, obviously, that is out of question. She had a life threat.
If she had a live threat, she must be in a police station. वहाँ जाके उनको रो धो के सुनाए तो फिर तो समझ में आती है कि she was having a live threat. If she is standing in the graveyard and sobbing, the only reason one can find out that some dear one of her had died. कि उसका कोई करीबी, कोई प्यारा जो है वो इंतकाल कर गया था. That is why she was standing in the graveyard and she was sobbing. So this is how you use logical inference as well as empirical inference to get to your answer. Let's have some more types of questions before we conclude this lecture. The next question we are going to discuss is reference based questions. Now there can be different types of reference based questions. The number one is a reference to line question. एक ये हो जाता है कि they'll refer to a typical line, they will refer to a particular set of lines and they'll ask you about the main idea expressed in those lines. These questions may be asked as the main idea of line 19 to 21 is, and then you will be given 4 options regarding the main idea. ठीक है, या वो आपसे इसी को यूं भी पूछ सकता है, the lines 19 to 21 express that. अब वो उनका जनरल एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो है वो आपसे पूछ लेगा. So this type of question can be asked regarding specific lines. In the same way, you can be asked reference to paragraph questions. Here, instead of lines, you will be asked about the passages, about the paragraphs. The para 2 refers to, आगे certain options वो आपको दे देगा. So ये paragraph के भी आ सकते हैं. And in the same way, you can be asked reference to pronoun questions. How they will be asked? I in line 23 refers to, आगे वो नाम दे देंगे, डिफरेंट कैरेक्टर्स दे देंगे. ठीक है, चार्ल्स है, जेम्स है, डेल है, व्हाटएवर, स्मिथ है, तो उसका नाम जो है वो आपसे पूछने लग जाएंगे. एक एग्जांपल लास्ट वाले की देख लें. The mother was severely upset as her daughter did not
listen to her. Her in line 4 refers to alpha, mother, and beta, daughter. Here you can clearly tell that her is referring to mother. So our correct option will be not beta but alpha. तो reference to line questions जो है वो आपके इस तरह के develop किए जा सकते हैं. Then you have detailed questions. Now by the look of it you feel कि शायद आपसे details पूछी जा रही होंगी. ठीक है, you will be asked to express the details of a certain topic, of a certain phenomena, but no, it is not the case. These questions are about exclusions. जो चीज़ शामिल नहीं है वो पूछी जा रही होती है कि you'll have to have a detailed analysis of the passage and then you will have to tell what is not included in that passage. Questions ये कैसे आ सकते हैं? All these can be the reasons of thunderstorms except नीचे 4 reasons दे देगा. 3 will be the lawful legal reasons and 1 will not be the accurate reason, and you will have to identify what is not included in the passage, what is not the reason of that particular phenomena. Now these types of questions can be tricky because normally आप जब comprehension कर रहे होते हो तो you are looking for the information that is given, वो चीज़ ढूंढनी होती है जो passage में मौजूद है, but all of a sudden you are required to do or to locate a thing that is not given. तो आप वो जज्बात की बहाव में जो है वो बह जाते हैं and you tend to identify the thing which is included, but याद रखें it is about the exclusions. Detailed पढ़ना है, that is why they are called detailed questions, that you will have a detailed review of the passage and then you will find out what is not the part of that passage. So इस तरह से आपने इसको लेके चलना है. Next देखते हैं reorganizing the text now these are very important. ये कैसे questions होते हैं? You will have to find out all the possible reasons. Reorganizing the text कि वो जो information होगी, relevant information होगी, that will be dispersed, that will be distributed in various parts of the passage. आपने उसको क्या करना होगा? उस सारी information को reorganize करना होगा. I can give you a perfect example from your text. आपने पढ़ा बटन फर्स्ट लेसन है आपका फर्स्ट ईयर में, उसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाट वर द रीजंस दैट नॉर्मा गेव टू हर टू परसुएड हर हस्बैंड. अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक आध रीजन देके एंड दे फील एवरीथिंग इज डन एंड दे डू नॉट गेट द मार्क्स बिकॉज देयर आर मल्टीपल रीजंस
that Norma actually gave. कौन सी reasons थी? At the first place, he said that they are just joking. Then she said it's a psychological research. Then she said some eccentric millionaire is playing games with the people. Then she said they just want to study the reaction. It's psychological research. And then finally, she gave the reason that she actually wanted to improve the lifestyle, their lifestyle collectively. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लास्ट रीजन लिख देते हैं और वो पहले वाली रीजन जो है वो नहीं लिखते. This is an incorrect response to that question, because you will have to reorganize all the information related to that question. तो ये देख लीजिएगा, इसमें एक ही चीज बस आपने ख्याल रखनी होती है कि encircle all the possible reason. That is it. ठीक है, बस यही इसमें प्रॉब्लम है और ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. The next one is main idea questions. Now they are very important. कैसे हो सकते हैं? What is the theme of the passage? अब ये थीम बेस्ड है. नॉर्मली आप क्या करते हो, मैं इधर लिख भी देता हूं, बी केयरफुल about the first and last passage. बहुत ध्यान से. Normally you feel कि first passage it captivates you, it engages you, but avoid it. Same is the case with last passage. Sometimes it allures you. आपको लगता है कि बिल्कुल यही उसका थीम है, लेकिन वो sometimes उसका थीम नहीं होता. I can quote you examples. For example, if you talk about the first passage, the first lesson of second year, the dying sun, तो उसमें वो क्या करता है? The main idea is to discuss the creation of universe. That is the main idea. But the first passage is not about the creation of universe. It is about the vastness of universe. So अगर आप पहले passage को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल ही different चीज है. Then you have a lesson God be praised in first year. याद है? मौलवी अबुल वाला. उसमें the main idea is to express the sorrows and sufferings of मौलवी अबुल. यही उसकी वजह है. ये उसका main theme है. But if you go through the first 2-3 passages, you'll feel that he wants to describe the pomp and show of मौलवी अबुल. आपको लगेगा कि वो उसकी शान शौकत बयान करना चाह रहा है, उसकी आसानियाँ बयान करना चाह रहा है, हालांकि वो उसकी आसानियाँ बयान करना नहीं चाह रहा. So that is how sometimes the start or end can be confusing. So be very careful about it while choosing the main idea. That should encompass the whole passage, not the beginning or the end only. ठीक है, so इसको बस आपने बहुत ध्यान से देख लेना. Then title based questions, ये इंटरेस्टिंग होते हैं. आपसे कहा जाता है suggest a suitable title या what will be the suitable title for this passage. Now 2-3 चीजें आपने देखनी है. At the first place, your title should be brief. कोशिश करें preferably
वन वर्ड टाइटल, सिंगल वर्ड का टाइटल होना चाहिए। हमारे यहाँ, हमारे पड़ोस में भी बहुत लेंथी टाइटल हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। भाई सास बहू एनफ, नो नीड टू ऐड क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर वाज अ ड्रामा इन पाकिस्तान, में नाम ले देता हूँ, दैट वाज ये मेरा दीवानापन है। भाई दीवानापन इट इज एनफ, सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि टाइटल मस्ट बी ब्रीफ। दीवानापन एनफ। एक और ड्रामा था, मुबारक है, मुबारक हो बेटी हुई है। भाई बेटी एनफ, बेटी मुबारक कह दें चलें, दैट इज एनफ। बट मुबारक हो बेटी हुई है, एंड आई यूज्ड टू लाफ, यार ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है, सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। सेकेंडली, it must be relevant to the theme of the passage। अगर वो relevant नहीं है टाइटल, तो फिर एक बहुत पॉपुलर ड्रामा होता है पाकिस्तान में। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स फ्रॉम द ड्रामाज एंड फिल्म्स बिकॉज यू नॉर्मली डू सो, यू डू वॉच देम। एक ड्रामा बड़ा पॉपुलर होता है, मेरे पास तुम हो। Now I feel you may disagree, but I feel that the title was completely irrelevant। उसके पास तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, वो भी नहीं रही एंड पे। ठीक है, तो उसका जो टाइटल था मेरे पास तुम हो, that was not the relevant title। पॉपुलर बहुत हुआ, हिट हो गया, ठीक है, ओके, गुड इनफ। ठीक है, दानिश के मरने पे सबको बहुत अफसोस हुआ था, बट द प्रॉब्लम इज दैट दिस टाइटल वाज नॉट एट ऑल रेलेवेंट, सो इट मस्ट बी रेलेवेंट। एंड द थर्ड थिंग इज it must be comprehensive। it must include all the things। for example, आपकी एक लास्ट स्टोरी है फर्स्ट ईयर में, एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर्स। अब उसका अगर वो करता ना द ऑथर, तो इट वुड हैव बीन वेरी ब्रीफ, इट वुड हैव बीन रेलेवेंट एज वेल, बट वो क्या होता, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता। अगर वो करता था एंजल एंड द ऑथर, तो फिर भी शायद कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता, बिकॉज द स्टोरी वॉज नॉट ओनली अबाउट द एंजल एंड द ऑथर, द स्टोरी वॉज अबाउट एंजल, ऑथर एंड द अदर्स। दैट इज वाई जेरोम ने उसका जो टाइटल चूज किया, दैट वॉज क्वाइट अ कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल ऑफ द एंजल, द ऑथर एंड द others। So these three things must be considered before choosing a title। And avoid eye catchers। avoid eye catchers। For example, मैं आपको एक पैसेज वर्बली सुना देता हूँ, I hope you will enjoy it। कहते हैं कि there was a middle-aged bachelor। People used to ridicule him for not getting married। In agony of his decision, he decided to marry not once but twice। But the problem was that one of his wife was way younger than him and the other one was way older than him। The older wife plucked every black hair he had so that he may look quite similar to her, and the younger wife plucked every white hair he had so that he may look similar to her। In the end, he was completely bald because he lost all his hair। Now let's come to the title। स्टोरी को छोड़ दें, टाइटल पे आए। अगर मैं इसका टाइटल लिखूं A middle-aged bachelor, it's very brief but it's not comprehensive। ठीक है, because he was not a bachelor at all, he married, तो he did not remain bachelor, तो वो बैचलर तो रहा ही नहीं, तो irrelevant हो गया टाइटल। सेकेंडली, अगर मैं इसको कहूँ कि साइड इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपल मैरिजेस, yes, it seems true, but no, it is not the true thing, it is not the relevant thing, because he suffered not because of multiple marriages, he suffered because of marrying two opposite women। ठीक है, तो ये इसका टाइटल जो है वो क्या होगा, करेक्ट टाइटल क्या होगा, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैरिंग ऑपोजिट वुमेन। दिस इज व्हाट
the correct title should be. So इसको बस आपने ध्यान से इन चीज़ों को देख लेना है, and hopefully I do pray for you that you will get maximum marks in your comprehension